आ रहे हैं आप म्यूट कर लीजिए, बीच में अगर क्वेश्चन रेज करना होगा रेज द हैंड, आई जस्ट अलाउ यू टू अनम्यूट योरसेल्फ। और ऑन योर वीडियो कैमरा ऑन करिए, बार बार बोलने का जरूरत नहीं है। तो लास्ट क्लास हम लोग बुलियन अलजेब्रा डिस्कस कर रहे थे। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट वेरियस लॉ अंडर बुलियन एंड प्रूफ द सेम बाय मींस ऑफ ट्रूथ टेबल। तो बिफोर डिस्कशन ऑफ बुलियन पोस्टुलेट्स, today first of all we discuss about the De Morgan's theorem, because there are two theorem or law you can say which is also giving assistance to reduce the complexity of any Boolean function. So earlier you discussed this theorem under set theory. So De Morgan's theorem, basically this theorem states that for any Boolean variable a and b, ठीक है ना, two laws is there, a plus b complement is equal to a complement dot b complement. That is, here what is the observation, कि complements of a plus b is what, it is the logical OR operation. तो a plus b आपका logical OR operation है, तो complements of the OR operation is equivalent to the, you can say intersection, you can say तो अकॉर्डिंग टू दिस, यानी कि जो दो लॉ हम लोग डिस्कस करेंगे, उस दो लॉ में पहला है a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट, एंड सेकेंड वन इज a डॉट b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट. नाउ basically in set theory we just use this plus as a union and dot with a intersection. Complement is as it is, जो वहां यूज कर रहे थे वही यहाँ पर भी complement यूज कर रहे हैं. तो only the union is replaced by OR operation, logical OR operation, and intersection is replaced by logical AND operation. Now we just prove this law by means of truth table. So you already know, first a plus b complement is equal to a complement dot b complement. Then by means of truth table, you have to maintain the column for LHS and RHS part. Now to first of all you have to identify how many variables are there. So because we are using two variable and we are giving the particular theorem using two variable, so here two variable is 2, so here n is equal to 2, therefore total combination you have 4 combination of input. That means अब यहाँ variable क्या क्या है, you just think about the variable. So variable is your a b or a plus b, or a, yes, first of all a and b, and you need a bar and b bar also, because for RHS part आपको a bar और b bar का जरूरत होगा. So you just find out the a bar and b bar column. After that you think about LHS and RHS part. So for LHS part you need a plus b, so a plus b, because after finding the a plus b you can find out the complement of a plus b. Now in RHS part you have to perform logical AND operation in between a bar and b bar. So you have a column for a bar and b bar, you just do the particular a bar b bar here. Now you have to generate all the column. सारे कॉलम के लिए आपको वैल्यू जो है फाइनलाइज करना है. तो वैल्यू फाइनलाइज करने के लिए नाउ दिस वन इज योर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, 6 and 7. Now as per the De Morgan's theorem we have, you have to prove LHS equal to RHS. So LHS, for LHS you have a column number 6 and for RHS you have a column number 7. So once the output
of column 6 and 7 is identical. That means this theorem is proved by means of truth table. Now number of column number of row you have 4. तो ए बी के लिए पहले हम लोग कॉलम जनरेट करेंगे, तो टोटल 4 का हाफ करेंगे, तो हाफ इज 2, दैट इज 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, देन half of this 2 1, that is 0 1 0 1, and then after we think about the a bar. So a bar, put your video on, वीडियो ऑन रखिए सारे लोग. तो ए बार के लिए क्या है कि वी हैव टू फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा. तो 0 इज रिप्लेस्ड बाय 1 एंड 1 इज रिप्लेस्ड बाय 0. इन द सेम मैनर वी complete the column for b bar, that is 0 replaced by 1 1 0 1 0. Then we have to apply logical or operation in between first and second column. तो a और b के बीच में हमको logical or लगाना है. logical or में आपको पता है कि output is high when at least one of its input is high. That means for 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1. Now apply complements, यानी कि you have to apply complements on this a plus b. तो just 0 replaced by 1 0 0 and 0. Finally a bar b bar, that means a bar b bar थर्ड और फोर्थ कॉलम के बीच में you have to implement the logical and operation. तो logical and operation के लिए आपका conclusion क्या है? Your conclusion is output is high when all its input is high. मतलब identical है. हाँ, तो 1 1 है, अगर 1 1 है तो your output is high, 1 0 low, else it will be 0. Yes, that means see the after completion of the truth table, the output of column 6 and 7 is identical. You just mention Yes, here, sir. since the output of column 6 and column 7 is identical, therefore this law is proved. A plus b complement is equal to a complement dot b complement. In the same manner you just prove the second one. Proof second को वाले को proof करिए. Just do it by yourself. A dot b bar is equal to a bar plus b bar. Now you have to generate the column for a bar b bar, as well as from a dot b. First of all you have to find out the a dot b and then the complement, and then use a bar b bar to find out the a bar plus b bar. That means almost again 7 columns are there to finalize the particular theorem. इस theorem को भी prove करने के लिए आपको same 7 column चाहिए. Only the gate is changed, यानी in place of logical or you have to use logical and. तो जहां जहां logical or है वहां पर logical and use करना है, ठीक है ना. Do it by yourself. इसको करिए, हो जाएगा. Again by means of truth table, we have to generate column for a b, a bar b bar, then yes Shubham Raj बोलिए. सर बोलिए शुभम राज, कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, बन गया, वही बोल रहे थे. ठीक ठीक, आइडेंटिकल हो गया ना. ठीक है. तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ इनपुट आपका 2 ही है, तो कॉम्बिनेशन 4 बनेगा. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन के लिए ले लेते हैं 2 0 2 1 0 1 0 1, और फिर ए बार हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट, बी बार हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट,
ए और बी यानी फर्स्ट सेकंड कॉलम के बीच में लॉजिकल एंड लगाना है, तो केवल 1 1 के केस में 1 होगा, बाकी सारे केस में 0 होगा। और इसका कॉम्प्लीमेंट 1 1 1 0। और थर्ड और फोर्थ कॉलम के बीच में लॉजिकल और लगाना, तो एक भी इनपुट हाई होगा तो आउटपुट हाई होगा, दैट इज 1 1 0 अगेन 1 0 1 अगेन 1 0 0 0। दैट मीन्स दिस टू कॉलम इज आइडेंटिकल। दैट मीन्स फर्स्ट, थर्ड, fourth, fifth, sixth, and seventh. So here, since the output of column 6 and column 7 is identical, therefore A dot B complement is equal to A complement plus B complement. So this one is also proved by means of truth table. Now we just list out all Boolean theorems. Before discussion of Boolean postulate, we just list out all Boolean theorems. And whatever law we discuss as well as the De Morgan's theorem, now we collectively list out all the theorems under Boolean theorem. तो अब इस लिस्ट को बनाने के लिए बेसिकली we use all law starting from the identity law. So from each law we have a particular theorem. That law become the theorem, and we just prove that theorem by means of other tools, ठीक है ना, other than the truth table. Now to finalize the list, first of all, just you can also do the same, आप खुद से भी कर सकते हैं. Now we just enhance the Boolean theorems. First 4 theorems comes from the identity law. So what is the first law, Ashish Rahul? For any variable A, आइडेंटिटी लॉ में 4 लॉ हम लोग डिस्कस किए थे. व्हाट इज द फर्स्ट वन? a plus 0 इक्वल टू सर ये 1 और a, because whatever value a you have, on the basis of that output is generated, because first one input is fixed, 0 fix है, so if the value of a is 0, it is 0. If the value of a is 1, it is 1. Now what is the second one? a plus 1 1 is equal to 1, because whatever value of a you have, if one input is fixed, that is 1, तो logical or में क्या है कि at least one of its input is high, then output is high. And yes, what about the next a dot 0? What is this? A dot 0 equal to a dot 0 equal to what we discuss? 0. That means कि whatever value of a you have, if the particular constant value is 0, then final outcome is 0, because आपका logical and में क्या है, when both input is high या all inputs are high, then output is high. But here in the case one of the input is low, so whatever value of a you have, output always in the form of 0. Now the next one is a dot 1 equal to a dot 1 equal to a. Why a? Because one input is fixed a. So if the value of a is 1, the output is high. Otherwise, if the value of a is 0, then output is low. So whatever value of a you have, outcome is generated on the basis of that value. So first 4 theorems comes from the identity law. Then we have 2 theorem comes from inverse law. That is, for any Boolean variable, x plus x bar equal to 1 and x dot x bar equal to 0. Now 2 theorems comes from the idempotent law, that is a plus a equal to a dot a equal to a. Now 9, 10, 11, 12, that is the theorem comes from absorption law. So what is the first absorption law, Ashish? A plus ab. A plus a dot b. A plus a dot b is what? A. And a dot a plus b ब्रैकेट में इक्वल again a bar b. No. What is a dot a plus b? A or ab? A. Okay. Then a plus a bar bracket में a bar into b. A bar into b. What is the outcome? A plus b. A plus b.
Okay. Then A dot A bar plus B. A bar plus B equal That to is AB. okay. A into B. Okay. So after that, two theorems we have. That is, after absorption law, we have commutative law. Communicative law. Commutative. No. Commutative. That is, A plus B is equal to B plus A, A. and A dot B is equal to B dot A. A. Now, after that, we have two associative law. So under associative law, we have A plus B, B plus C is equal to A plus B plus C. And again for logical and A dot B dot C is equal to A dot B dot C. Now two law we have from distributive law, that is A dot B plus C is equal to A dot B plus A dot C, and A plus B dot C is equal to A plus B dot A plus C. Now next we have two De Morgan's theorem, that is for two variable A plus B complement is equal to A complement dot B complement, and A dot B complement is equal to A complement plus B complement. Now the listing of these theorems comes from the existing law. तो ये सारे थ्योरम्स जो है, अब ये क्या है, अभी De Morgan's theorem हम लोग प्रूफ किए. तो De Morgan's theorem for two variable, if you have to prove the same by using three variable, then only you have to change enhance the variable in section LHS as well as RHS. तो RHS और LHS में आपको enhance करना होगा. Now we already proved in that theorem. हाँ बोलिए. डबल कॉम्प्लीमेंट भी तो बताया था ना, x डबल बार इक्वल टू x. अच्छा, एक वो मिस कर गए, ठीक है ना, वो सीक्वेंस में मिस करे, कोई बात नहीं, इसको लास्ट में लिख लेते हैं. डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, यानी कि x डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x, यानी डबल कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी बुलियन वेरिएबल इज वेरिएबल इटसेल्फ. ओके, तो वी हैव 21 थ्योरम्स. नाउ we already proved these theorems by means of truth table. Now we discuss Boolean postulates. Earlier we discussed it. So we have another tools through which we can prove the particular theorems, that is Boolean postulates. Now basically what is Boolean postulates? So it is a set of rules. It is a set of rules designed by using all basic gates, that is and, or, and not gate. यानी कि ये बेसिक गेट्स जो आपका है, इस बेसिक गेट्स एंड और नॉट को यूज करके इससे डिराइव किया गया कुछ पोस्टुलेट्स, और उस पोस्टुलेट्स को के बेसिस पर किसी भी थ्योरम को हम प्रूफ कर सकते हैं. तो अब पोस्टुलेट्स, व्हाट इज द पोस्टुलेट्स एक्चुअली? तो वी हैव ऑल अराउंड 10 postulates. We already discussed that. So that 10 postulates are derived from and, or, and not gate. And the first 4 postulates is derived from and gate. Next 4 postulates are derived from or gate, and last 2 postulates are derived from not gate. That is the 10 postulates. So whenever we are in the process to prove any theorem, then we just use that postulates. Now how the postulates are designed, just see here. Now postulates number we have, and we just have 1, 2, 3, 4 postulates. Now for AND gate, you already know that at least 2 input is needed. आप AND gate में मिनिमम 2 इनपुट लेते हैं, तो 2 इनपुट के लिए जो कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, वो कॉम्बिनेशन को यहाँ लिखना है पोस्टुलेट डिजाइन करने के लिए. तो दिस 1, 2, 3, 4 इज द पोस्टुलेट नंबर, एंड दिस पोस्टुलेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम AND गेट. नाउ AND गेट में अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इनपुट रो कॉम्बिनेशन, तो 4 कॉम्बिनेशन बनेगा 2 इनपुट के लिए. तो फर्स्ट विल टेक 0 and then 1, 1, and for second column we take 0, 1, 0, 1, and in between this 2 operand we just place dot. That is the representation of AND gate.
तो ऑलरेडी आपको पता है कि अगर हम एंड ऑपरेशन लगाते हैं कोई भी दो इनपुट पर लॉजिकल 0 और 1 के ऊपर, तो हमारा आउटकम हाई होता है जब ऑल इनपुट्स आर हाई. इन ऑल द रेस्ट केसेस द आउटकम इज लो. तो दिस फर्स्ट 4 postulates, these postulates are derived from logical, यानी you can say derived from AND operation. तो ये 4 postulates आपका AND operation से derived हुआ. Now the next 4, that is 5, 6, 7 and 8. Again we just take the 4 combination for this one also. So 0, 0, 1, 1, again 0, not 0, 0, 1, 0, 1, and we just place logical OR in between these two, and we already have a conclusion. Your in logical OR gate, your output is high when at least one of its input is high. So only in this case the output is 0, rest cases output is high. So these particular postulates, these 4 postulates are derived from this one is derived from OR operation. OR operation. ठीक है ना. Next, postulate number 9 and 10. Again for NOT gate we have single input. So for single input we have 2 combinations. That is half of 2 is 1. That is 0 and 1, and we just take complement on both. So complement of 0 is 1 and complement of 1 is 0. Now this 2 is derived from NOT operation. ठीक है. तो these are the postulates. ये आपका postulates है. That is postulate number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So these are the 10 postulates. So whenever you have to check out the particular, यानी कि जहां पर भी कोई भी postulate आपको apply करना होगा, तो you just use this number. यानी कि whenever you have to replace 0 for 0.0, then you just mention postulate by why you are writing this by postulate number 1. Why you are writing 1 in place of 1.1, so by postulate number 4. Now how we can identify the postulate number? Just see, whenever we are deriving the particular postulate, then in all cases, yani in case of 2 inputs, we are using 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So basically these are the these all are the representation for 2 input equivalent decimal. तो decimal equivalent इसका क्या है? ये इसका decimal equivalent है 0, 0 के लिए 0, 1, 2 और 3. तो अब आपका ये सीक्वेंसिंग क्या है कि जब भी आप ये चारों यूज करेंगे तो आपका सीक्वेंसिंग 0, 1, 2, 3 होगा. अब ये सीक्वेंसिंग आपका यानी कि जब भी आपको पोस्टुलेट नंबर आइडेंटिफाई करना होगा तो ये चारों सीक्वेंसिंग को आपको चेकआउट करना है. पहले एंड और के लिए समझना है. तो एंड और के लिए तो एंड और के लिए ये आपका एंड के लिए ऑपरेशन के लिए यूज होता है. दिस इज फॉर एंड दिस इज फॉर और. तो एंड और के लिए ये सीक्वेंस आपका बार बार यूज होगा. तो जब भी कोई एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो एंड का सीक्वेंस 1 to 4 है और का सीक्वेंस 5 to 8 है. नॉट गेट का सीक्वेंस आपको ध्यान रखने में कोई दिक्कत नहीं है कि नॉट का तो 0 से स्टार्ट होता है, तो 9 पोस्टुलेट नंबर 9 0 कॉम्प्लीमेंट होगा और पोस्टुलेट नंबर 10 आपका 1 कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि 0 फर्स्ट आएगा फिर सेकंड में आपका 1 आएगा. तो 9, 10 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम आपको पोस्टुलेट नंबर 1 से लेकर 8 तक में आइडेंटिफाई करने में है. तो इसमें 2 स्टेप में आइडेंटिफिकेशन आप करेंगे. फर्स्ट स्टेप, जो भी आपका इम्प्लीमेंटेशन यानी कि जो भी आपका ऑपरेशन हो रहा है उसको सबसे पहले देखेंगे कि इस डेसिमल इक्विवेलेंट का कौन सा सीक्वेंस है. तो फाइंड आउट द सीक्वेंस यूज्ड इन द पोस्टुलेट. तो पर्टिकुलर पोस्टुलेट में कौन सा सीक्वेंस है. तो ये सीक्वेंस आपका 0, 1, 2, 3 है. तो इस सीक्वेंस को पहले हम लोग चेक करेंगे.
Second, check out which operation is performed in between ऑपरेंड, यानी कि उस ऑपरेंड के बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो कौन सा ऑपरेशन में दो ही ऑपरेशन होगा, एक एंड होगा या और होगा। तो थर्ड, इफ एंड देन सीक्वेंस इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप टू 4, ठीक है ना। अगर एंड ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि दोनों ऑपरेंड के बीच में डॉट है, तो आपका सीक्वेंस 1 से 4 तक जाएगा। अब 1 से 4 में आपको देखना है कि इसमें से कौन सा सीक्वेंस है, पहले नंबर का है, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर या चौथा नंबर। अगर पहले नंबर का है तो पोस्टुलेट नंबर 1 होगा, दूसरे नंबर का सीक्वेंस है तो पोस्टुलेट 2 होगा, तीसरा होगा तो पोस्टुलेट 3 होगा, चौथा सीक्वेंस होगा तो पोस्टुलेट 4 होगा। सेम थिंग, फोर्थ वन इज इफ और ऑपरेशन। If or operation, then sequence is वाला स्लाइड में क्या लिखे हैं? देखिए, पहला चीज आपको देखना है कि सीक्वेंस आपका जो है, सीक्वेंस यूज्ड, ठीक है ना। थर्ड है इफ एंड मतलब इफ एंड ऑपरेशन, ठीक है ना। इफ एंड देन सीक्वेंस इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप टू 4, 1 से शुरू होकर 4 तक जाएगा, ठीक है ना। और अगर इफ और यानी इफ और ऑपरेशन, देन सीक्वेंस इज स्टार्टेड फ्रॉम 5 अप टू 8, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल, हाउ यू कैन फाइंड आउट द पोस्टुलेट नंबर। जैसे कोई भी आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सपोज करो कि 1 + 1 = 1 होता है। अब इसको बताना है कि 1 + 1 = 1 होता है, ये कौन सा पोस्टुलेट है। तो सबसे पहला चीज क्या करेंगे, सबसे पहला चीज कि इन दोनों के बीच में क्या है, 1 1 है, तो ये कितने नंबर सीक्वेंस में आता है, 4 नंबर में। यानी कि 0 0 0 1 0 1 1 में ये 3 2 1 और 0 है। तो ये आप अगर ऐसे काउंट करें तो 1 2 3 4 फोर्थ नंबर सीक्वेंस में आता है। तो पहला चीज तो फोर्थ नंबर सीक्वेंस प्रूव करने आता, हाँ पूछ रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं। प्रूव करने आता है। हाँ, मतलब ये सारा थे, हाँ आता है, मतलब कोई पर्टिकुलर थ्योरम्स प्रूफ करने के लिए बोल दिया जाएगा। सारे थ्योरम को एक बार थोड़े ना पूछा जाएगा, कोई पर्टिकुलर, जैसे आपको बोल दिया जाएगा डिमर्गन्स थ्योरम को बुलियन पोस्टुलेट से प्रूफ करिए, ठीक है ना। प्रूफ डिमर्गन्स थ्योरम बाय मींस ऑफ पोस्टुलेट्स, तो पोस्टुलेट नंबर वहां मेंशन करना होगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं, लेकिन याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 0 0 0 1 1 0 1 1 आपको पता है कि 0 1 2 3 के लिए है। तो ऐसे भी अगर 3 है यानी कि 4 नंबर पर है, तो ये आपका सीक्वेंस 4 नंबर पर है। तो अब यहाँ देखेंगे कि इसके बीच में क्या है, और ऑपरेशन, यानी कि जो हम लोग स्टेप देखे, फाइंड आउट द सीक्वेंस यूज इन द पोस्टुलेट। तो सीक्वेंस 4 आपका है पोस्टुलेट में। फिर आपका चेकआउट करना है विच ऑपरेशन इज परफॉर्म। तो यहाँ एंड और ऑपरेशन परफॉर्म है, हम लोग देखे। अब इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, इफ एंड देन सीक्वेंस इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 to up to 4। और अगर एंड नहीं है और है तो इफ और ऑपरेशन देन सीक्वेंस इज स्टार्टेड फ्रॉम 5 up to 8। तो यहाँ और ऑपरेशन है तो सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से स्टार्ट होगा। लेकिन आपका सीक्वेंस नंबर कितना है, 4 नंबर है, तो 5 से स्टार्ट होगा तो कितना होगा, पोस्टुलेट नंबर लास्ट 8 यस, तो पोस्टुलेट नंबर 8। तो दिस वन इज फॉर पोस्टुलेट नंबर 8। हाउ वी प्रूव दिस वन। तो ये 1 + 1 = 1 किसके बेसिस पर लिख रहे हैं, तो बाय पोस्टुलेट नंबर 8। कैसे आइडेंटिफाई किए, तो 1 1 है, दैट इज द फोर्थ पोजीशन ऑफ द फोर्थ सीक्वेंस, और 1 1 के बीच में प्लस है, तो प्लस है तो 5 से इनिशिएट होगा, 5 से इनिशिएट होगा, और चौथे नंबर पर है तो 5 के बाद 5 6 7 8, इसलिए पोस्टुलेट नंबर 8 होगा। अगर सेम थिंग को अगर हम यहाँ लिखें 1.1 = 1, इसका पोस्टुलेट नंबर क्या होगा,
ठीक है ना, यू हैव टू आइडेंटिफाई पॉस्टुलेट नंबर। तो 4 हाँ देखिए 1 1 है, इसका मतलब 4 है, यानी कि जो सीक्वेंस है वो 4 है। और दूसरा है कि एंड ऑपरेशन हो रहा है इसमें, तो एंड ऑपरेशन है, इसका मतलब है कि आपका जो सीक्वेंस एंड का है 1 से 4 जाएगा, तो तीसरा स्टेप में 1 से 4 जाएगा, इसका मतलब कि ये चौथे नंबर पर है। तो पॉस्टुलेट नंबर कितना हो गया 4। तो यहाँ पॉस्टुलेट नंबर 4। तो आप किसी का भी पॉस्टुलेट नंबर बिना इस लिस्ट को जनरेट किए भी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे रैंडमली अगर हम पूछें किसी से, शुभम रोल नंबर 21 बैच 1, ये बताइए कि 1.0 इज इक्वल टू 0 होता है बाय विच पॉस्टुलेट नंबर? सर बाय विच पॉस्टुलेट नंबर 1.0 इक्वल टू 0? 3 तो बोल रहे हैं सर। 3, हाँ ठीक है। 3 कैसे बोले आप? पहले हाँ ठीक है, 1.0 सर हाँ ठीक है, सीरियली देखेंगे, हाँ सीरियली नंबर पे आता है। ठीक है। तो 10 जो है आपका ये तीसरे नंबर पर आ रहा है, 2 का इक्विवेलेंट है, और उसके बीच में एंड ऑपरेशन है, तो एंड ऑपरेशन ठीक है, सही है। पॉस्टुलेट नंबर 3 है, एंड ऑपरेशन है, तीसरे नंबर पर आ रहा है, इसलिए 1 से सीक्वेंस स्टार्ट होगा, तो 1 2 3 पॉस्टुलेट नंबर 3। किसी का भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं आप। आशीष राहुल आप बताइए। 1 + 0 इक्वल टू 1, 1 + 0 इक्वल टू 1 बाय पॉस्टुलेट नंबर। आशीष राहुल 7 सर बोल रहे 7। अच्छा सुनाई नेटवर्क ठीक नहीं है 1 सर। + 0 7 ठीक है। 1 + 0 दैट मींस 1 0 है, तो तीसरे पोजीशन पर है, तो 5 से आप स्टार्ट करेंगे, तो 5 6 7 ठीक है, करेक्ट। तो आई थिंक दैट कि पॉस्टुलेट नंबर मेंशन करने में किसी को दिक्कत नहीं होगा कि कौन सा पॉस्टुलेट आप अप्लाई कर रहे हैं। नाउ एज लाइक थ्योरम, यानी कि जैसे हम लोग बुलियन फंक्शन को ट्रुथ टेबल के थ्रू प्रूफ किए, we can also prove it by means of postulates. Now we just use the proof first one by one. First we prove the first theorem. Similarly you just complete the rest one. So a + 0 is equal to a. Now अब यहाँ पर क्या है, जो भी आपका बुलियन थ्योरम्स है, इस थ्योरम्स में अगर राइट साइड में कांस्टेंट है या सिंपल सिंगल वेरिएबल है, then there is no need to prove the particular theorem for both LHS and RHS part. लेकिन if LHS and RHS both consist certain expression, then you have to prove LHS as well as RHS part using the same set of variable. Now at the moment whenever you are in the process of proving the particular law, तो प्रूफ करने के समय में आपको ये ध्यान रखना है कि एटलीस्ट यू हैव टू चेक आउट द पर्टिकुलर law or theorems by means of 2 set of operands, यानी 2 आपको कॉम्बिनेशन के लिए चेक करना है, रेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को आपको एज्यूम करना है। तो सबसे पहले कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन के लिए आपका नंबर ऑफ इनपुट रिस्पॉन्सिबल है। वी ऑलरेडी नो दैट फॉर n नंबर ऑफ इनपुट 2 to the power n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट रो वी हैव। तो यहाँ पर अगर सिंगल इनपुट है तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशन 2 होगा, तो इस केस में तो दोनों ही कॉम्बिनेशन के लिए हमको चेक करना होगा, यानी एक बार 0 होगा एक बार 1 होगा। sir. लेकिन अगर आपका सेट ऑफ इनपुट 2 है, यानी कि एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल यूज हो रहा है, तो वी हैव 4 इनपुट रो कॉम्बिनेशन। तो आउट ऑफ 4 यू कैन चेक एनी 2, कोई भी 2 आपको चेक करना होगा, बाकी को एज्यूम कर लिया जाएगा कि अगर 2 के लिए ये अप्लाइड है तो बाकी पर भी ये लागू हो जाएगा। अगर 3 इनपुट है तो 8 कॉम्बिनेशन बनता है, तो 8 कॉम्बिनेशन को चेक नहीं करना है, कोई भी 2। तो इसके लिए सिंपली हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक बार जितना भी आपका सेट ऑफ इनपुट है सबको 0 ले लिए और एक बार सबको 1 ले लिए। लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आप कोई भी कॉम्बिनेशन को चेकआउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी अगर 3 वेरिएबल है तो 3 में वेरिएबल से जो भी आपका 8 कॉम्बिनेशन बन रहा है, उस 8 में से कोई भी 2 कॉम्बिनेशन को यूज करके यू कैन प्रूव द पर्टिकुलर थ्योरम। नाउ लेकिन सर इसका प्रूफ तो ऐसे होगा कि सर 5 और 7 पोस्टुलेट से सर ये सही